The problem is women try to be the best at everything. Why is that? Why does society condition women to be best in all spaces of life? In exclusive conversation with PBNS, Pinky Anand, senior advocate and former additional Solicitor General of India, talks about the challenges she faced in her profession as a first-generation lawyer and how she thinks society is more accommodative of women working and flourishing in leading professions. You are right. I mean, definitely there is, because एक तो और आप सोचिए इकोनॉमिक्स भी हो गया है. For good or bad, economics is a major reason for accepting that women will work today. तो मतलब एक फैमिली में अगर हस्बैंड एंड वाइफ हैं तो एक्चुअली वो फैमिली एक सिंगल इनकम पे चलना भी मुश्किल हो गया है. सो वन एक्सटेंट इज इकोनॉमिक्स, मनी, simple requirement of whatever that is. The second feature is, yes, with increasing education and women wanting to stretch the field forward. And I must tell you कि ये peer जो एक dialogue है वो भी बहुत translate होता है. Women see other women being successful. ये जो एक net effect goes cascading, that is a big effect. So if you see X person and you say, I would like to be like this lady, let's say, and you emulate that lady, that whole progression system always has a cascading effect. So that really has a big pressure issue as far as women's representation is concerned. Today's acceptability is definitely more, but there's still the ultimate thing saying, what should a woman be doing? When should a woman be responsible to a family? Still the belief is that the responsibility of a family is more of a woman's domain than a man's. I'll just share with you one of the statements I remember one of my friends and panelists made in a TEDx lecture. And she was asked, what do you think, about this gender issue? And she's saying, our problem is that women try to be the best in everything. You want to be the best wife, you want to be the best mother, you want to be the best daughter, you want to be the best everything. You can't be. You can only try your best to do everything as best as you can, but there's a limitation, and something or the other will ultimately be sacrificed. So this whole classification of, भाई तुम्हें अगर सॉरी टू से ट्रेडिशनल हाउस होल्ड में हस्बैंड बीवी से एक्सपेक्ट करता है कि वो खाना भी परफेक्ट बनाएगी और सुबह भी उठकर बाकी भी सब चीज़ें संभाल लेगी, तो एक मेल का जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स अ हाउस होल्ड, टुवर्ड्स अ फैमिली स्ट्रक्चर हो रहा है और बहुत लेवल्स पर हो रहा है, दैट नीड्स अ लिटिल मोर इम्पीटस. आप इसी तरीके से देखिए, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने, आप गवर्नमेंट की बात करें, maternity benefit is extended to 12 weeks and that is something which was made so that it is comfortable. आप सिस्टम चाहिए. Child crashes working women के लिए सुप्रीम कोर्ट में one of the best crashes that I have seen. It is such a pleasant environment. Anybody would want to take their children and at least have them कि आप काम कर रहे हैं, and workers also, you're not talking about lawyers alone. The same thing with High Court, at least Delhi High Court, and most other courts are. So there is a complete functioning towards this level that provide a support, because you can't. There is something which is required and you have to treat the children of today as the ultimate responsibility. They can't be, ये थोड़ा कि आपने एक gender equation पे कर दिया तो therefore X situation should be sacrificed. No, there should be no sacrifices there. But some compromises, some adjustments, not compromises, adjustments, balances. Those have to be maintained. How do we break the wall of societal expectation that society imposes on women? Advocate Pinky Anand has a unique take on this question. It's all to do with expectation. एक्सपेक्टेशन कि भाई आप अच्छा, तुमने माँ बेटी को कहेगी या सास बेटी को कहेगी या बहू को कहेगी, भाई तुमने बेटे को देख लिया कि उसने ठीक तरह खाना खा लिया, वो आराम से रात को सो गया. आई एम सॉरी, यू नीड टू टेक केयर ऑफ ईच अदर, बट द क्वेश्चन इज ऑफ द एक्सपेक्टेशन. कहाँ तक आप उस एक्सपेक्टेशन को कर सकते हो. सो दिस जॉइंट कॉन्ट्रीब्यूशन कह लीजिए, एटलीस्ट sharing responsibilities towards a family upbringing. There are some things that a woman can do better, there are some things a man can do better. बट क्या कहा जाता है, नहीं वुमन इज़ बेस्ट इन दिस. बल्कि वो भी क्लासिफिकेशन, वही रोमांटिक पैटर्नलिज्म की बात है कि आप एक यू गिव अ प्रोटेक्टिव एटीट्यूड, इनसे नो अ वुमन इज़ गुड वहाँ कर दीजिए. नहीं, लॉ में ये सब्जेक्ट ईजी है, महिलाएं कर लेगी. आई जस्ट गिव यू सम एग्जाम्पल्स. ये होता है. सो यू नीड टू टेक ऑफ दिस एंटिक्वेटेड कॉन्सेप्ट्स. एज आई सेड, you are a human being, you are a citizen, you can contribute X, maybe it's more than Y, maybe it is less than Y. Whatever you can do, you should be able to do. A human being is meant, according to God and to everything else that is expected, to be able to satisfy the expectations of what he is capable of and what he is made capable of. तो हमारा सिस्टम एनर्जाइज करे, एजुकेशन करे, नॉलेज दे, स्ट्रक्चरिंग दे, सपोर्ट दे. हेल्थ, आप हेल्थ सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करेंगे, women are denied of so many health services. एक्सेस नहीं होता. तो बाय दैट्स वाई फॉर एग्जाम्पल मोर्टेलिटी जो है वो इस कारण से होती है. नॉट ओनली द फैक्ट आप नहीं चाहते, बट कहते हैं नहीं बच्ची छोड़ो, अच्छा स्कूल जाना है, नहीं
लड़की की क्या ज़रूरत है, उसको तो शादी वादी करनी है, आप उसको छोड़ दीजिए, लड़के को पूरा आप अच्छे स्कूल में पढ़ाइए, अच्छे कपड़े पहनाइए, अच्छे खाना खिलाइए, वो मतलब तंदुरुस्त भी रहे। दीज आर द कॉन्सेप्ट्स यू नीड टू फाइट। लड़का पेट चढ़ जाए, लड़की नहीं नहीं तू गिर जाएगी, चोट लग जाएगी तो लग जाएगी, डजंट मैटर। आप शुरू से चढ़ाएंगे तो उसको भी आ जाएगा। आई हैव सीन सम यंग वुमेन डिपेंडिंग ऑन एरियाज बीइंग एबल टू क्लाइंब as well as anybody else. So it's just a matter of what your training is. Even God has conditioned everybody. Nature has, not God only. Nature, which is part of the same structure. Conditioned you such जैसे आपकी परवरिश होगी, जैसे आपको मौका मिलेगा, आप उसी से अनुकूल होंगे. We asked senior advocate Pinky Anand if she has perceived any bigger change in society since the passing of law that prohibits triple talaq. I'll tell you, ये सुप्रीम कोर्ट में केस से पहले की मैं बात कर रही हूँ. आप ही की किसी ऐसे प्रोग्राम में मैं थी, एंड उस प्रोग्राम में हर समाज के हर वर्ग से सब लोग थे, एंड एवरीबडी वॉज अगेंस्ट दिस प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक. Everybody, and this includes from the same communities, it includes from the other communities, and this is across board, और ages भी, not only young, so much so कि मुझे याद है मृदुला सिन्हा जी जो गवर्नर थी गोवा की, और उसके बाद खैर वी हैव लॉस्ट हर नाउ, वेरी ग्रेट लेडी ऑफ आवर कंट्री, तो वो भी एक बड़ी यंगस्टर की तरफ बात कर रही थी, और ये इशू बहुत चल रहा था उस समय भी. ओवरऑल एवरीबडी वॉज अगेंस्ट. सुप्रीम कोर्ट स्टेप्ड इन. गवर्नमेंट ने भी उस समय, आपको याद होगा, एफिडेविट दिया था सपोर्टिंग द फैक्ट कि ट्रिपल तलाक जैसी प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए. एनीवे, लॉन्ग एंड शॉर्ट इज द होल मैटर वाज हर्ड. कॉन्स्टिट्यूशन बेंच डे आफ्टर डे बहुत बहस हुई, एंड अल्टीमेटली द ट्रिपल तलाक प्रैक्टिस वाज अबॉलिश्ड. बाकी अभी भी मैटर्स पेंडिंग है, बट ट्रिपल तलाक वाज अबॉलिश्ड. उसके बाद कानून आया. लेकिन डेफिनेटली फिगर्स हैव शोन, मेरे पास अभी रेडली फिगर्स नहीं है, बट ट्रिमेंडस डिक्लाइन इन केसेस ऑफ ट्रिपल तलाक. वैसे भी बहुत पॉपुलर प्रैक्टिस नहीं थी, ये उनका अपना मानना था, उनका अपना स्टेटमेंट था, लेकिन इट वाज देयर. ये मतलब तलाक तलाक तलाक, चाहे फ़ोन पर है कुछ करके कि आज बीवी पसंद नहीं तो उसको आप घर भेज दीजिए, कोई सिस्टम नहीं, कोई एजुडिकेशन नहीं. आज बस इसी बात पर कि आपने आज खाने में नमक ज़्यादा डाल दिए या मिर्ची ज़्यादा डाल दी है, जो भी कुछ कर लिया, आई डोंट वांट यू, आई वांट समबडी एल्स. सो दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस द वे इट वाज अबॉलिश्ड. दो चीज़ें होती है, कानून का एक बहुत इंपॉर्टेंस है. दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से लॉ इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल्स. It is a tool for social change, because law not only changes, but it forces you to think that something is wrong. Law defines also what is wrong. आज जब वो डिफाइन करता है तो एक हमारे देश में भी आदत है, हम भी मान जाते हैं, मुश्किल से मानते हैं कई बार, लेकिन मान जाते हैं कि ये चीज़ गलत है. कानून कहता है. अब जैसे आप देख लीजिए, ट्रैफिक वायलेशन से कोई नहीं मानता, यू कीप ऑन वायलेटिंग कि जब तक कर सकते, चल जाती है मेरी चल जाए. लेकिन जिस समय मुझे पकड़ा जाएगा और 10 औरों को पकड़ा जाएगा तो मैं भी एटलीस्ट सोच के जाऊंगा, मे बी आई स्टिल डू इट. सो ओवरऑल देयर हैज बीन अ ग्रेट reduction in numbers on the basis of this triple law, which has been abolished by our law. How is the government trying to make the law better to protect human dignity? Not only expand, actually ये सब practices अभी सुप्रीम कोर्ट में अंडर कंसिडरेशन है. पिटिशंस ये ऑलमोस्ट साथ में ही आई थी, बट उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कन्फाइन किया था कि अभी ट्रिपल तलाक के इशू को ले रहे हैं, और ये हलाला की जो प्रैक्टिस है वो बाद में लिया जाएगा. तो पॉलीगमी, हलाला, ये सब इश्यूज़ हैं जो अभी और पिटिशन में सुप्रीम कोर्ट के आगे पेंडिंग है, और सुप्रीम कोर्ट के आगे भी पेंडिंग है, और यह समाज के ऊपर भी है कि जो प्रैक्टिस हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, जो ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ है. ये ह्यूमन डिग्निटी की बात है, सिर्फ विमेन डिग्निटी की बात नहीं है. अच्छा, कई बार ये होता है कि हम लोग एक क्लासिफिकेशन देते हैं, ये भी एक जेंडर इशू है कि ये विमेन डिग्निटी. अब अमेजॉन ने एक प्रैक्टिस शुरू की थी, मैं आपको बताती हूँ, कुछ साल पहले, कि आप ये नहीं कहेंगे द बेस्ट प्लेयर इन विमेन्स चेस टीम, द बेस्ट विमेन प्लेयर इन द चेस टीम. अब वाई डू वांट टू पुट दैट कैटेगराइजेशन? आप अच्छे हैं तो अच्छे हैं, आप ये जेंडर इशू करके, मतलब इसी समय से कई, मुझे याद है यूनिवर्सिटी के समय भी कई चीज़ें ऐसी हुई थी जेंडर को लेकर आइडेंटिफाई की जाती थी. तो आप कहीं टॉपर इन विमेन्स, टॉपर इन मेन. अब आप इकट्ठे पढ़े, और आज की डेट में, बाय द वे, आई एम सॉरी, बट विमेन आर डूइंग ऑलमोस्ट बेटर इन एकेडमिक्स एंड मेन आर. दिस इज नॉट अ जेंडर स्टेटमेंट, ये रियलिटी का है. लेकिन आप अगर कहीं नहीं, विमेन में ये था और मेन में ये था, समटाइम डाउन द लाइन दैट रिफ्लेक्ट्स द मेजर चेंज. सो द मिनट यू कम इन टू अ ब्रॉड इक्वालिटी, I can understand कि जहाँ unequal situation हो, for example in terms of, let us say, some kind of physical strength, तो that also I differ. I believe कि women do a lot of physical work. ये तो कहने की बात है कि women can, but ठीक है, आप शायद 2 मन की चीज़ नहीं उठा सकते हो, men उठा सकते हैं. I don't want to get that. जो नहीं कर सकते तो no issue. But what you can do, it should not be put into brackets. ये bracketization of women and men is something that has to be taken away. Senior advocate Pinky Anand states 4 pointers of equal opportunities for women. If you ultimately give opportunities,
जो आपके सीनियर्स हैं, आप वो आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं. जैसे जस्टिस लीला सेठ है, मुझे याद है, बात करती है, शी इज ऑल्सो नो मोर. शी वॉज द फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस of a high court, and ultimately she would have made it to Supreme Court, but she wasn't there by that time. So Justice Leela said, for example, she used to keep saying that, मुझे बोला गया, can you do this? And I said, why not? So the whole question is of giving an opportunity by seniors, by your contemporaries. Second is giving place for that opportunity to be exercised. आप मौका उस सराउंडिंग्स का दीजिए ताकि आप उसको एक्सरसाइज कर चुके. एंड एवरीबडी फेल्स, प्लीज अंडरस्टैंड, नोबडी इज परफेक्ट. कोई आता गोद से तो पैदा होकर नहीं आता कि आप परफेक्ट है. ना वो लॉयर बन के आता है, ना वो डॉक्टर बन के आता है. समय की बात है. ऑल दिस प्रोफेशनल इश्यूज रिक्वायर सम वर्क, सम इम्पीटस, सम प्रेपरेटरी वर्क, सम एक्सपोजर. आप एक्सपोजर देंगे. अच्छा, एक चीज़ मेरा बहुत मानना है हमारे देश में जो हमें और करना चाहिए, एंड आई फॉर्चुनेटली बीन वेरी कंफर्टेबल विद इट, पब्लिक स्पीकिंग. आई थिंक बच्चों को इनकरेज करना कि आप बोलें. लड़कियों को क्या बोला जाता है, ज़्यादा मत बोलो, डोंट बी सीन, कम बोलो, धीरे बोलो. क्यों नहीं बोलो, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड. बट बी दैट इज इट मी, आई एम जस्ट सेइंग द होल आइडिया ऑफ कल्टिवेटिंग आवर यंगस्टर्स टुवर्ड्स पब्लिक स्पीकिंग, आई थिंक engenders वन ऑफ द बेस्ट लेवल्स ऑफ कॉन्फिडेंस. सो आप उसको लेकर फर्दर जाते हैं. अ सेंस ऑफ अचीवमेंट that I have achieved, I shouldn't be guilty. A sense of balancing which you are constantly asked to do. ठीक है, आज मैंने ये काम नहीं किया, वही बेस्ट वाली बात नहीं करा तो नहीं करा. I did the best I could, but more than that I can't do. Men कौन से perfectionist होते हैं, but you can't do it. There's some human traits that are there. So this whole acceptability, providing support situations like welfare schemes, for example maternity. अब वर्क फ्रॉम होम, फॉर एग्जाम्पल कोविड समय में आप मानेंगे, सॉरी टू से, बट गुड और बैड और इंडिफरेंट, बट women have really appreciated the opportunity to be able to work from home because they can meet all their responsibilities without wasting time on commuting and going to courts and even waiting at times, because frankly in our system these days एक चीज़ और है, we don't have any defined timings in the profession, legal profession, litigation in particular. I'm not talking about corporate, वैसे corporate also work a long time, बट लिटिगेशन में कोई समय नहीं होता. आप सुबह करिए, रात को क्या समय बीतेगा ना आप जानते हैं ना आपको खुदा जानता है. सो हाउ डू यू डील विद दैट? देयर इजंट अ लिमिटेशन ऑन टाइम. इनफैक्ट सिस्टम में देयर शुड बी लिमिटेशन. वी हैव टू स्टार्ट वैल्यूइंग टाइम. अगेन, अ वुमन्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू हाउस होल्ड बेनिफिट शुड बी वैल्यूड एज एन एसेट. उसका एक इकोनॉमिक, आई एम नॉट सेइंग हम मॉनेटरी करें, इकोनॉमिक वैल्यू इट. बर्तन धो दिए तो ये नहीं कि सिर्फ आपने बर्तन धोया, आप किसी को लगाते हैं उसको पैसे देते, तो यू वुड हैव गिवन सम मॉनेटरी वैल्यू टू. यू मस्ट स्टार्ट वैल्यूइंग ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन. एंड आई थिंक आज के विद दिस टेक्नोलॉजी टाइम वी शुड अंडरस्टैंड इट इवन मोर. हर चीज़ की एक इकोनॉमिक वैल्यू है. आपके समय की वैल्यू जो कल, आई एम सॉरी, इन आवर कंट्री ऑल्सो वी डिडंट थिंक मच ऑफ टाइम वैल्यू. टुडे देयर इज वैल्यू ऑफ टाइम. आप मेरे साथ कितना समय बैठे हैं, आप इस समय में और क्या कर लेते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दीज आर वेरी वेल नोन कॉन्सेप्ट्स. So we need to value the time of a woman which is spent in a household and treat that as an asset creation. ये part time working which sometimes a lot of countries have adopted, for example कि आप accommodate कर दें in terms of time, घर से कर लीजिए. आप तो आजकल तो वैसे ही कोविड में काफ़ी रहा है. So similar kind of facility अगर आपको provide कर सकते हैं, where a hybrid kind of situation could be provided for women, itself very very helpful. And of course incentives are always good. Incentivizing into any form, whether it is monetary or whether it is academic, whether it is applause for your contribution to law and to life, these themselves go into a long way. And rest of it, as I said, you develop even more specialized fields, and that itself, don't confine women to certain laws and say you are good for these, you're not good for these. That classification is very ill-founded and wrong. Senior advocate Pinky Anand sends out her message for those who wish to bring change by improving our laws. Nothing is for granted, but nothing is impossible for you. Everything is possible. The world is ahead of you. Today only I was talking to some people and they were saying that our children, after having watched you, want to become lawyers. Professional life is the best life that is possible, and that is my belief, more than other fields, but that is my personal belief. You may have yours, but it is indeed very rewarding. I told you it's an examination. It is victory at one level, it is defeat on the other, but whatever it is very exciting, and it keeps your adrenaline flowing and keeps you wanting to do more and more and more. And that, I think, is the charm of the profession. Second, I think the contribution of law to society is one of the greatest assets we have. We have been able to make major landmark changes in social fabric
because of laws and because of the way in which we've interpreted our constitution. Our constitution is the most primary document we have, and it is the sine qua non for everything that we do, and it's our sacrosanct book on which we rely upon for everything, for how we lead our lives. It has guided us well. Let us keep our constitution flying. Let us keep our thoughts flying. Let us keep our laws flying. Let us take our society and our country forward. Thank you for watching. Stay tuned with PBNS for more stories on women empowerment.